तन्हा ऐसे क्यों बेचैन फिरे जागेंगे जरूर ये भाग तेरे कोई जानना ये जोश तेरा कोई जानना जुनून तेरा घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना. Hello, my wonderful audience, and welcome to a truly special episode of Hold That Thought. I'm your host, Sarah Mashood, excited to be here with you on this extraordinary day, December the 25th. A day that carries a double significance as we celebrate not only the festive spirit of Christmas, but also the birthday of a visionary leader, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who laid the foundations of Pakistan. Today, as we bid farewell to 2023, we're not just marking the passage of another year, we're celebrating diversity, unity, and the enduring legacy of a man who shaped the destiny of a nation. My guest, as always, will be experts from the TorqueTribe. This time we have two as a treat for you. It rhymed. Well, we're rounding like a 40-minute session with both of them in this fortnightly session. You may view the tribe down here. And if you don't see it, my team will show it in a second. Now to introduce my first guest. She's one of the IVLP alumni, a certified trainer, master's in mass communication from Kinnaid College, Lahore. She's authored a book called Raaz-e-Nehan, running her own platform called For a Cause, promoting values like peace, tolerance, and respect. She's worked in academia, social, and corporate sectors. We bring to you Sadaf Usman. Hello, Assalamualaikum Sadaf. How are you doing? Assalamualaikum. Thank you so much for having me here. I'm well, and it's a pleasure to be here at Hold Your Thought. And I hope we have a wonderful session. Inshallah. Sadaf, let me introduce our second guest for the day. Our next tribe consultant and trainer has over 15 years of experience in the industry, has been a student of Coaching Academy, London, known for his work here and internationally, spearheaded projects like Click, funded by World Bank. Then there's British Council, Widows International, and he's a dear old friend. Ladies and gentlemen, Saquib Niaz. Hello and salam, Saquib. Kya hal? How are you doing? Saquib, can you hear me? I can hear you, but I am muted. Okay, are you good now? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Now we can. And before we dive into today's enriching dialogue, a shout out to all those people who tune in live. Please drop a comment. Tell me who you are, where you're from, and what you do, because your story is meta. As Maya Angelou beautifully put it,
We're more alike, my friends, like we're not unalike. Your story stitched together our global tapestry of ideas and experiences. And now we're going to talk about diversity and inclusion, two sides of the same coin. All right, my guests. In our daily lives, we meet people from all walks of life. There are men, women, people with disabilities, people who are neurodiverse. We have people from different communities, classes, castes. So it's a diverse group of people we encounter on daily basis. Each person adds something special to the world we live in. This brings us to two words we hear a lot these days. There's diversity and then there's inclusion. Let's unpack this a bit. What do these words really mean in our daily lives, at our workplaces, in our communities? Can we really embrace diversity without practicing inclusion? And why do we often hear these two terms together like they're two sides of the same coin? Saqib. Well, to me, I think diversity. See, it's if you're an organization, if you're in society, there will be diverse perspective. There will be diverse ideas, diverse belief systems. So जिस तरह वो गार्डन होता है ना, उसमें फ्लावर्स होते हैं, डाइवर्सिटी भी इस तरह होती है, लोग आपके इस तरह होते हैं, डिफरेंट तरह के फूल होते हैं, डिफरेंट तरह के उनके टाइप्स होते हैं. So उनके perspectives डिफरेंट होते हैं, उनके आइडियाज डिफरेंट होते हैं, बिकॉज उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, उनका एक्सपोजर डिफरेंट होता है. सो टू योर क्वेश्चन कि क्या डाइवर्सिटी इंक्लूजन के बगैर क्या होगा सिदारे का, क्या होगा सोसाइटी का? आई थिंक it can't coexist, because inclusion is about creating an environment, creating a place where people feel valued, heard, at the same time empowered, and feel safe, technically. So if I'm safe to open up, to speak to you, only then can change happen. So नहीं हो सकता जब वो include आप मुझे नहीं करोगे. So garden है, flowers है, inclusion is sunlight, and sunlight is my right. So अगर sunlight नहीं है, inclusion, diversity का कोई फायदा नहीं है. इदारे में diversity है, include नहीं कर रहे आप उनको सुन नहीं रहे, आप उनको जांच नहीं रहे, आप उनको empower नहीं कर रहे, फायदा नहीं है. Simple. So किस्से के दो कॉइन के दो हिस्से हैं, वो साथ ही चलेंगे. So diversity के बगैर इदारा नहीं चल सकता, inclusion के बगैर इदारा खोखला है. That's my take. Beautiful. Sadaf, if I pass on the question to you, what would you like to say about diversity and inclusion playing a role together? Or is it like... No, I totally agree with Saqib. I think ऐसा ही है. और अगर इसको सारा अगर हम लोग इसको बेसिक उससे देखें तो आप देखें एक फैमिली में भी डाइवर्सिटी होती है. Although you are part of the same family, even then एक फैमिली के मेंबर्स के अंदर भी डाइवर्सिटी होती है. सबकी डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं. अगर इंक्लूजन घर में ना हो तो आप देखें उसकी वजह से जो है डिस्ट्रप्शन हो जाती है, उसकी वजह से डिस्टेंसेस आ जाते हैं. तो ये तो एक बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल है, ये तो एक बहुत ही बेसिक वैल्यू है, ये बहुत ही कोर जो है ना वो आप समझ लो कि है हर रिलेशनशिप के अंदर कि डाइवर्सिटी तो दो पार्टनर्स के अंदर, दो फ्रेंड्स के अंदर होती है. तो इफ यू डोंट काइंड ऑफ एक्नॉलेज दैट फर्स्ट कि यस, और डाइवर्सिटी को हम डिफिकल्टी ना समझें, जो मैं बहुत दफा लोगों को कहती हूँ कि पीपल आर डिफरेंट बट डोंट कंसिडर दैट एज अ डिफिकल्ट थिंग. आप बस उनका देखने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड दैट दे आर कमिंग फ्रॉम, और जो भी उनकी डिफरेंट डायनामिक्स हैं, वो एज हो सकती है, वो जेंडर हो सकती है. मैं इसके लिए बड़ी एक एग्जांपल देती हूँ कंग फू पैंडा की. आई थिंक वो बड़ी इंस्पायरिंग और डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करती है. एंड आई ऑलवेज टेल जो भी मेरे ट्रेनीज होते हैं कि अगर आपने सीखना है तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं. तो मैं रेफरेंसेस ऐसे भी यूज करती हूँ कि जब द पैंडा कम्स एंड यू नो द स्टोरी, तो कैसे जो मास्टर शीफू होते हैं वो first he is unable to understand that he is a different student and he has to be treated in a different way, he has to be taught in a different way. But once he accepts that difference and he treats him and he handles him with his strengths, तो वो फिर आप देखें वो क्या निकल के आता है. तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी को जब आप एम्ब्रेस करते हो और इंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हो टीम मेंबर्स की, तो वो स्ट्रेंथ बन जाती है एक टीम के लिए. Sadaf, you've given such a beautiful example that anyone could relate to because of the diversity that's shown in the movie itself. I have another question for you.
Reflecting on your educational path, how would you compare studying in a missionary school, a convent school, with other educational systems? What unique insights did that offer? And because I understand it's like comparing different recipes for the same dish, each one has its own flavor, and each one brings something new to life. How would you comment on that? Your question actually made me realize that I was in a missionary school. I never really felt it that way. That's so strange because there was such an inclusive environment in the college that I come from that I actually want to give a big shout out to my alma mater that, they never made me feel like I never felt awkward. And that is such a beautiful thing that we were always made to feel like, there was no kind of what would you say favoritism of that kind, or no discrimination. I wanted to say there was no discrimination. In fact, it was as much my college as someone else's. And yes, we would have hymns, and we would have people read from the Bible also, but we would also have the Quran recitation. So in that sense, and the values were, light, courage and love. तो एक चीज जो मुझे लगता है कि एज ह्यूमंस ना, देयर सो मच दैट कनेक्ट्स अस. सो अगर हम लोग ह्यूमन लेवल पे आके चीजों को देखें ना, तो हमें रियलाइज होता है कि वही वाली चीजें जो आपको खुश करेंगी, वही मुझे भी खुश करेंगी. रिस्पेक्ट, काइंडनेस, एम्पैथी, दीज आर थिंग्स जो यूनिवर्सल हैं. और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ, प्ले इट सेफ. तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो हमारे हैं ना नॉर्म्स, अगर आप उनको अंडरस्टैंड कर लो, और हर रिलीजन के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बेसिक ह्यूमैनिटी के कुछ प्रिंसिपल्स अगर इनको हम एम्ब्रेस कर लें, तो हमारे लिए जिंदगी बहुत दीज डिफरेंसेस. यस, यू कैन ऑफर योर, यू कैन डू योर प्रेयर एंड आई कैन डू माइन. आप अपने अपने डिफरेंसेस के साथ बहुत अच्छा पीसफुल को एग्जिस्ट कर सकते हो. आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग. मुझे आपके सवाल से बड़ी एक बहुत मुझे पेनफुल सी बात याद आई. आई रिमेम्बर देयर वाज, आई मेट दिस lady who was of Christian faith, and she said that she felt awkward practicing her religion or practicing her, way of life in a Muslim dominated school. So वहां पर I think हमें भी understand करना है कि हम universities or colleges, so I understand, but as a society, how are we making the people from minority? And today is 25th December, and we know what the white in our flag stands for. And friend वेरी राइटली सेड कि उसने हमारे झंडे को उठाया हुआ है, हमारा झंडा खड़ा हुआ है उस व्हाइट के ऊपर. तो अगर हम उस माइनॉरिटीज को अंडरस्टैंड करें और उनके पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखें, तो हमारे अंदर वो सारी, वी विल रियलाइज के हम उनको कितनी वो इंक्लूजन वाली फीलिंग, और एज साकिब ने कहा सेफ्टी वाली फीलिंग अगर हम उनको देंगे, तभी वो फुली सोसाइटी के अंदर अपना डेवलप भी कर सकेंगे और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी कर सकेंगे. Beautiful, beautiful. That's Saqib, having facilitated sessions with multicultural groups, how do you find that diversity of the group enhances the learning experiences of the people who are part of that group? How does that work? Well, I think it's been a rewarding experience, I tell you, because been to London, been to Sri Lanka, been to Thailand. काफी groups के साथ मैंने interact किया है, काफी लोगों के साथ, काफी learning भी रही है. So working, I think, with the multi-cultural groups, amazing experience, amazing इस वजह से because they bring a mix of ideas, like experiences and perspectives जो आपकी सोच में भी नहीं होते हैं. So I remember when I was in Thailand, my belief system got questioned, and that's where I unlearned कि halal और haram क्या होता है. It's a long debate, but there was this guy who challenged my belief system कि haram तो वैसे normally bribery and all, this is haram, but we don't actually feel that it is, and also think that it is haram. But when it comes to, so हम KFC गए थे, so KFC में हम पूछ रहे थे उनके से कि यार ये हलाल है या हराम है, बता दें. तो उसने कहा कि कभी तुमने सोचा है कि तुम अगर रोजी मेहनत से कमाओ और फिर and this KFC वाली example. So this actually triggered, like my thought कि यार वाकई मैंने कभी इस ज़ाविये से सोचा नहीं. So जब मल्टी कल्चरल उसमें बैठते हैं ना लोगों के साथ, you get to interact, आपके बिलीफ सिस्टम क्वेश्चन होते हैं. मेरे एज अ ट्रेनर एज हुए थे. So I think वो जो different perspectives on the table आते हैं ना, so it's kind of a जिस तरह हर फ्लेवर एक डिश में फ्लेवर डालते हैं ना, so हर फ्लेवर का अपना मजा होता है, और जो आउटकम निकलता है वो बड़ा मजेदार निकलता है. सो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है इन टर्म्स ऑफ
बिलीफ सिस्टम्स क्वेश्चन तो हुए हुए हैं, बट एट द सेम टाइम लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई है, बिकॉज आप एट टाइम्स आप फिक्सेटेड माइंडसेट के साथ, एट टाइम्स इफ यू व्हेन यू एज यू ग्रो, सो आप लर्न नहीं कर रहे होते, आपके आइडियाज़ भी थोड़े से वो अंदर वो फिक्स हो जाते हैं. बट somebody like if you meet somebody from different culture, वो आपको ओपन करता है बिकॉज आपने शायद वो एक्सपोजर आपको मिला ही नहीं होता है. सो to me, I think what has changed me as a person, as an also as a trainer, कि एक्सपोजर जो मिला है ना, उसमें वो चीज़ तो मुझे नहीं पता थी मेरे बारे में, वो मुझे पता लगना शुरू हुई. एंड आई थिंक ये होना भी चाहिए एट टाइम्स, बिकॉज इदारे के अंदर व्हाट यू डू इज यू आप अपना ये ओपन रखें, यू अनलर्निंग के लिए भी तैयार रहें हर वक्त, एंड एट द सेम टाइम आप चेंज भी होते रहते हैं. सो टू मी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा इन टर्म्स ऑफ interacting with people across the globe. Nice. Sadaf, I like to believe that the organizations are the microcosm of the environment that we're in. And it's the job of an organization to reflect real societies as much as possible rather than, just them being existing in a bubble outside that spectrum. What do you think is diversity just a societal expectation, or is there a substantial business case for a diverse and inclusive team? There's actual research that proves that diverse teams के जो profits और जो उनके production है या जो उनकी productivity है या जो उनके results हैं, they are far more superior than teams that are not diverse. तो ये तो एक अब समझ लें कि आप established fact इसको हम लोग कह सकते हैं. और इसकी बहुत ही sensible सी एक reason भी है कि जब different लोग आते हैं वो एक different नजरिए से अपने अपने एक ही issue को देख रहे होते हैं. मैं एक छोटी-सी बात इससे पहले ज़रूर करना चाहूँगी कि मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ एक चीज़ जो लैक करती है कि जैसे अगर हमें जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें, आई हैव ऑफ़न सीन दैट अगर वुमेन रिलेटेड कोई ऑर्गनाइज़ेशन या कोई कंपनी कुछ कर रही है, तो वो एक्सक्लूसिवली वुमेन अटेंडीज़ के लिए हो रहा होता है. I feel that is where we are wrong. We have to include the men in the debate and in the discussion because जब तक वो सुनेंगे नहीं, तो वो एक बैरियर रहेगा और एक वॉल रहेगी because it will be like a women issue. It will not be a company issue. तो जब तक हम लोग एक दूसरे और मैंने ये देखा है कि जब जिन ट्रेनिंग्स के अंदर और अगर कोई वुमेन स्पेसिफिक इवेंट है उसके अंदर इफ मेन हैव बीन देयर एज लिसनर्स they have empathized and they have kind of understood far more because वो human stories सुन रहे होते हैं. For them, it is not like couple of women have kind of made a group and they are backbiting about us because it is taken as that. But when you include men in the in the solution, you make them part of the solution. तो वो diversity जो है वो आपकी strength तभी बनती है, वरना आपको पता है ये कितना एक फ्रिक्शन पॉइंट बन जाता है कि जी खवातीन के तो मसले और खवातीन के बारे में ही सारी कंपनीज के अंदर बात और विमेन एम्पावरमेंट. So we have to kind of build those bridges where the communication is crossed. अगर जैसे मैंने आपसे minorities की बात की, I had no idea the kind of challenges that they have to. I had no idea. I never thought that they would have to face like they would have to face ridicule. They would have to face challenges because of the faith that they practice. Not from everyone, I'm saying, but yes, there are segments in our society that make it difficult. तो अगर हम लोग उनकी कहानियां सुनेंगे नहीं और हम उनके लिए बस exclusive for them अगर हम लोग अपने हमारी team में for example या company में we have some non-Muslims and we have their events but we don't participate with them or we don't include ourselves in their conversations and in their life, हम वो proper perspective नहीं ले पाएंगे कि उनके क्या challenges होते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है. और कंपनीज़ की जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि डाइवर्सिटी देखिए हर एक अपने एंगल से एक चीज़ को देखता है. और जब आपको एक ही प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल इफ यू हैव and you get a version from a 25-year-old and a 65-year-old and a person from Khyber and a person from Balochistan, आपके वो जो richness आ रही है ना इनपुट की and the product आपको पता है आजकल ग्लोबल मार्केट है, you're creating for the entire world. तो अगर आपको वो पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं तो आपकी उसकी जो रीच है और उसकी जो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं वो ऑब्वियसली मल्टीफोल्ड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द रिचनेस ऑफ द इनपुट यू आर गेटिंग फॉर द प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया. So it's very, very sensible to have diverse teams, but I think it calls for more engagement on the management side and more मेरे ख्याल में कि investment in the sense of communication. जो lines हैं वो कितनी आपकी efficient हैं, कितनी smooth हैं, कितनी balanced और just हैं. Because अगर वहाँ पर and it is also another proven fact कि अगर if employees are not feeling heard, if employees are not feeling valued, तो उनका turnover and
resigning from the organization, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. So with the new dynamics जिसके अंदर हम लोग virtually चीजें कर रहे होते हैं, जिसके अंदर communication barriers भी एक तरह से आ जाते हैं, one on one या person to person मुश्किल आ जाती है, उसमें हमें मुझे लगता है अब और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है in ensuring that everyone is getting heard. राइट आपकी एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात से मैं एक सवाल जोड़ूंगी साकिब के लिए यहाँ पर. साकिब, इन दिस डाइवर्स बिलीव्स वाला और वैल्यूज वाला वर्ल्ड, हाउ कैन वी क्रिएट कोहेजन स्पेशली व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज? आई थिंक हमारे बिलीफ सिस्टम्स डिफरेंट हैं, वैल्यूज डिफरेंट हैं, फटे तो होते हैं, लाइक so they are there, the conflict will be there, but it is very like important to remember that ये जो हमारे अंदर डाइवर्सिटी होती है ना, जो लोगों के अंदर, आई थिंक इसको इस दूसरे अंदाज से देखा जाए तो ये स्ट्रेंथ भी है. so whenever we encounter disagreements, I think it is an opportunity. So लीडर वो समझता है, वो thoughtful जो लीडर होता है, जो विजनरी लीडर होता है, वो समझता है कि now it's an opportunity जहाँ पे मुझे we gotta build the sort of cohesion. To me, I think communication is very, very important. Open communication. और communication में सबसे important is listening. You got to listen to somebody. सारा देखें, जब तक आपको मैं सुनूंगा नहीं ना, I can't understand you. और जब understanding develop होगी, तभी जाके I can connect. और connection जब develop होता है, तो उसके बाद क्या होता है? You got to trust each other. आप थोड़ा open होती है, मैं थोड़ा open होगा. So जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक समझेंगे नहीं. जब तक समझेंगे नहीं, तब तक connect नहीं होंगे. और जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, ट्रस्ट नहीं होगा, सो जुड़ेंगे नहीं तब तक जब तक एक दूसरे को सुनेंगे नहीं. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं इदारों में, सोसाइटी में, तो क्या किया जाए. दूसरा आई थिंक या प्लीज गो ऑन. तो इट्स लाइक लाइक आइसबर्ग जिस तरह होता है ना. सो आइसबर्ग में मुझे तो आपकी टिप नजर आ रही है ना अभी तक. कॉन्फ्लिक्ट तो उसी से हो रहा है ना. अब जब तक वो उस टिप के अंदर लाइक आइसबर्ग के अंदर जाऊंगा नहीं, थ्रू क्वेश्चनिंग, थ्रू प्रोबिंग, थ्रू लाइक कनेक्टिंग विथ यू, हैविंग डायलॉग विथ यू, ओपन कम्युनिकेशन विथ यू, तब तक वो ऊपर वाला नीचे वाला ऐसा ऊपर आएगा नहीं. सो हम अजम्पशंस बना लेते हैं कि यार ऐसी होगी, यार ये ऐसा होगा, ये बॉस मेरा ऐसा खड़ूस होगा, या मेरा बॉस जो हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं. सो आई थिंक उसमें एक तो ये. दूसरा आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज वी गॉट टू एजुकेट आवरसेल्फ एज वेल. मुझे नहीं पता कल्चर के बारे में, अगर किसी कल्चर के बारे में, तो आई शुड लर्न इट. जब तक मैं समझूंगा नहीं, तब तक मुझे तो नहीं पता कि मैं उससे कैसे बिहेव करूं, मैं उससे कैसे इंटरेक्ट करूं. जैसे वो सदफ बात करी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो है सेल्फ अवेयरनेस. सो सेल्फ अवेयरनेस अपनी, एज अ बॉस, एज अ मैनेजर, एज अ इंडिविजुअल, एज अ ट्रेनर, या जो भी आपका प्रोफेशन है. सो आई थिंक बाय लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स and values, we can actually break the stereotypes, the assumptions. I think जो misconceptions हम करके रखे होते हैं, and also then at the same time उससे फिर empathy develop होती है. But empathy का भी I think थोड़ा सा मैं अगर if you have time, so empathy is like ये नहीं कि I have to just put myself in your shoes. No, ऐसा नहीं है definition we have we've been हम सुनते आ रहे हैं. It's basically, not just understanding, putting yourself in someone else's shoes, but at the same time, you gotta sense it. You gotta sense के बाद you gotta articulate it. कहो. And then कहना भी सिर्फ काफी नहीं है. You have to act. Behavior के through दिखाओ भी कि तुम empathize करते हो. And this is what I think missing when it comes to dialogue, when it comes to conflict resolution जो हम इदारों में या सोसाइटी लेवल पे करते हैं. सो यानी कि डाइवर्स एनवायरनमेंट में कोहेजन क्रिएट करने के लिए डिफरेंसेस को एलिमिनेट करना जरूरी नहीं है, उनको एक्चुअली नेविगेट करने की जरूरत है इन अ हार्मोनियस मैनर. और इसके लिए ओपन कम्युनिकेशन, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, कॉमन ग्राउंड, आई गेस कॉमन ग्राउंड एट द सेम टाइम. कॉमन ग्राउंड, सिमिलर ग्राउंड्स फाइंड आउट करने होंगे. डिफरेंसेस तो अप्रिशिएट किए जाते हैं ना. हाँ, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट हार्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी. अदरवाइज we need to learn to appreciate them, because हर कोई डिफरेंट है. अल्लाह ने हर किसी को डिफरेंट बनाया. बिल्कुल, बेशक. अच्छा, so this question is going to be for both of you. I'd like Sadaf to answer first. As experienced trainers, जब सेशंस कंडक्ट आप करा रहे होते हैं, तो आपकी अप्रोच क्या होती है विद डाइवर्स ग्रुप्स, मेकिंग श्योर कि इंक्लूसिविटी का ख्याल रखा जा रहा है, कि वो इंटैक्ट है, हर कोई इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है?
बिल्कुल एक छोटी-सी बात मैं ऐड करूँगी कि जो साकिब ने कहा कि मुझे लगता है उसके एक जो बहुत चीज़ हम लोग मिस आउट करते हैं अपनी लाइफ में वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन क्योंकि ऑफ़न इन कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी ईगो जो है ना वो बीच में आ जाती है बिकॉज़ वी डोंट वांट टू एडमिट दैट वी माइट हैव बीन रॉन्ग या हमारे आइडिया को रिजेक्ट किया जा सकता है या जो दूसरा बंदा कह रहा था उसकी बात को ज़्यादा वैलिडिटी दी जाए या उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। तो आई ऑफ़न टेल माय सेल्फ आल्सो एंड माय फ्रेंड्स आल्सो कि इट्स नॉट अबाउट यू। बहुत दफ़ा हम ये सोचते हैं कि मतलब अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो हम उसको पर्सनल ले जाते हैं। हमारे आइडिया को या हमारे प्रेज़ेंटेशन के बारे में अगर कुछ आता है तो हम बहुत उसको नेगेटिवली और पर्सनली ले जाते हैं। तो वो जब तक हम लोग अपने आप को रीवायरिंग नहीं करेंगे अपनी मेंटल पाथवेज़ की, तब तक हम उसी नेगेटिव उस पे रहेंगे एंड वी विल नॉट बी एबल टू लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अगर हम लोग कंपनी का इंटरेस्ट इज़ सुप्रीम जैसे आप देखें हमारे लिए स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल्स हैं। अगर आप एक टीम को देखें क्रिकेट की एग्जांपल ही आप ले लें जो हमारे बड़ा एक फेवरेट पाकिस्तान का जो है स्पोर्ट तो उसमें भी ऐसा ही है कि जब टीम हमें नजर आती है कि दे आर वर्किंग देन कोहेजन हम कहते हैं दे वर्किंग लाइक अ टीम और कुछ टीम्स को हम देखते हैं हम कहते हैं कि ये इनके अंदर यूनिटी नहीं है और लग रहा है टीम की आपस में जो है ना वो सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स नहीं है so that makes a huge it's like winning and losing के बीच में डिफरेंस बन जाता है कमिंग टू द पॉइंट कि हम अपनी ट्रेनिंग्स में किस तरह से इंश्योर करते हैं डाइवर्सिटी को वी ट्राई कि हम डिफरेंट जो स्ट्रेंथ के ग्रुप जो स्ट्रेंथ की टीम्स हैं हम उनको ज्वाइन करते हैं वी डोंट वांट के एक ही इलाके या एक ही स्ट्रेंथ या एक ही एज ब्रैकेट के लोग एक टीम के अंदर हो जितनी आप उनको आपस में जितना ज्यादा आप इंगेज करेंगे जितना ज्यादा वो इन्वॉल्व होंगे तो वो उनको मौका मिलता है बिकॉज दे आर बियॉन्ड द वी वर्क के हट कर वो एक दूसरे को जान रहे हैं तो मुझे लगता है कि ह्यूमन लेवल पे एक दूसरे को जानने से बड़ी कोई स्ट्रेंथ नहीं है और स्टोरी टेलिंग से बड़ा कोई पावरफुल टूल नहीं है often storytelling has helped people see each other in a very very different light हम एक दूसरे को सिर्फ एक उसी तरह देख रहे होते हैं ये जी आ गए फाइनेंस का बंदा आ गया वो मार्केटिंग का बंदा आ गया तो वो एक उनका आपस में जो एक चलता रहता है बट इफ यू लुक एट ईच अदर बियॉन्ड दीज लेबल्स and you just look at each other as persons and you as humans as sons or daughters or as brothers जो भी उनकी कहानी है तो आप कि बहुत सारे ऐसे कनेक्टिंग पॉइंट्स निकल आते हैं कोई म्यूचुअल कोई इंटरेस्ट निकल आते हैं जिनके ऊपर आपकी एक अच्छी सी और मुझे लगता है कि ये हेल्दी आपको पता है कंपनीज के अंदर और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपको कंपनी से जोड़े रखता है वो आपकी ट्राइब है अगर आपकी अच्छी ट्राइब बन जाती है आपका एक अच्छा वर्क के अंदर वर्क एनवायरनमेंट के अंदर यू फाइंड बिकॉज यू आर स्पेंडिंग 8 hours of your day at a workplace minimum I would say तो अगर आप अपने जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा अपने वक्त का दिन का इतना बड़ा हिस्सा एक जगह गुजार रहे हो it can't and shouldn't be a dry experience for you it shouldn't be like कि आप बस काम पे जाते हो and you're बिल्कुल आपका एक और ही और रहा है because the work environment is not conducive to the personality you have तो इसलिए जरूरी है और यही कोशिश की जाती है कि उनको ऐसी एक्टिविटीज और ऐसी गेम्स और इस तरह की डिस्कशंस के अंदर एंगेज किया जाए कि वो उस डाइवर्सिटी के उसको एम्ब्रेस करना भी सीख लें और उसको सेलिब्रेट करना भी सीख लें Nice, beautiful. Saqib, what do you have to say? सारा मुझे हमेशा यही कमेंट मिलता है कि आप ऐसा माहौल बना लेते हैं कि हम खेलते हैं उस माहौल में ड्यूरिंग माय असाइनमेंट्स सो व्हाट आई डू इज बेसिकली आई क्लाइंट के साथ आई थिंक स्टार्ट विद क्लाइंट एज वेल सो क्लाइंट से पूछता हूं मैं दिस माय यूजुअल प्रैक्टिस कि आपके लोग किस तरह के हैं क्या करते हैं क्या किस तरह परफॉर्मेंस है उनकी क्या गैप्स हैं सो थोड़ी इनसाइट क्लाइंट की तरफ से मिल जाती है बट अगर एट टाइम्स नहीं मिलती तो व्हाट आई डू इज आई यूजुअली मैं जाता पहले ही हूँ बिफोर द सेशन स्टार्ट सो आधा घंटा मैं पहले चला जाता हूँ participants आना शुरू हो जाते हैं so what I do is I talk to them when you talk to them आपके जो क्वेश्चंस आपने बनाए होते हैं या जो आपके लीडिंग क्वेश्चंस ही बनते हैं उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आप किस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करें उनका क्या बैकग्राउंड है लाइफ के बारे में पूछते हैं स्किल सेट अगर स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो तो उसके बारे में पूछते हैं without making them realize that actually is part of you to connect with them later on so isse I think what has helped me this practice is isse to पहले at first step recognize हो जाती है ना डाइवर्सिटी कि आपको किस तरह के क्राउड को फेस करना पड़ रहा है किस तरह के क्राउड को आपको ट्रेन करना पड़ेगा so I think I take time to understand people and then through my training my ice breaker हो गए I especially like norm setting so norm setting में बड़ा मैं connect करता हूँ लोगों के साथ what I do is so norm setting में which I learned from my mentors so उसमें आप बड़ा कनेक्ट करते हैं आपको पता लग जाता है कि लोग किस तरह के और किस तरह के नॉर्म्स सेटिंग करवा रहे हैं बना रहे हैं
और उसमें ना व्हाट हैपेंस इज कि उसमें फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन एक हमेशा आता है कि मैं एक्टिव पार्टिसिपेट करूंगी या करना चाहता हूँ, या ग्रुप बोलता है कि हमें एक्टिव पार्टिसिपेट करना है। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर नॉर्म में आ गई तो फिर वो यू मेक श्योर दैट इट एक्चुअली हैपेंस व्हेन यू आर कंडक्टिंग द ट्रेनिंग। सो उसमें एक्टिव जब पार्टिसिपेशन होती है, हर किसी को पार्टिसिपेट करना होता है क्योंकि लिखा होता है नॉर्म में। तो इससे ना लोग खुलते हैं फिर, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ पनिशमेंट व्हेन यू ब्रेक द नॉर्म। सो एक तो थोड़ा डर डर के करना होता है, बट व्हेन इट वो जो करते हैं ना फिर उनको मजा आना शुरू हो जाता है कि अच्छा यार ये तो बहुत मजे की बात, बिकॉज हमें चांसेस कम मिलते हैं ना फ्लोर पे आने के, और एट द सेम टाइम हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि यार मैं कर सकूंगी या कर सकूंगा। व्हेन एक्चुअली हैपेंस, जब वो आते हैं तो उनको बड़ा मजा आ जाता है। एक अच्छा ये हो गया। दूसरा आई थिंक आप की एक्टिविटीज जो है ना बड़ी इंगेजिंग होनी चाहिए, बिकॉज एंगेजमेंट से ही आपको इंक्लूड, जो आप इंक्लूजन की बात कर रहे हैं ना, तो आपको दिखाना होगा कि आप एक्चुअली किस तरह इंक्लूड लोगों को कर रहे हैं। तभी जाके लोग जो एंजॉय भी करते हैं, द सेम टाइम जो ऑब्जेक्टिव होता है आपकी ट्रेनिंग का वो आपका अचीव होता है। सो आप इंक्लूड करें, आप पार्टिसिपेट करवाएं, आप सबसे पहले उनसे कनेक्ट हो, एंड देन जो फ्लो आता है ना सेशन का, बहुत मजेदार होता है, बिकॉज फिर आप लोग आपके हो जाते हैं। फिर आप जो कहते हैं यू बिकम द रोल मॉडल, थोड़ी सी लाइमलाइट आपको मिलती है, बट एंड एक्चुअली लाइक सो आपको बड़ा आसान होता है, रेपो जब बन जाती है ना, सो कनेक्शन जब बन जाता है तो आसान होता है पार्टिसिपेंट्स के लिए कि आपके साथ अब वो जो मैं बात कर रहा था, वो जो सेफ स्पेस बन जाती है, फिर आपकी सेफ स्पेस बना लेते हैं। फिर पार्टिसिपेंट्स जो खुलते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं, जो क्यूरियोसिटी, बिकॉज क्यूरियोसिटी दबी होती है ना, हम डरे हुए हैं कि यार मैं की कहूंगी तो मैं कैसे लाइक जज ना हो जाऊं, बट जब भी आप बैरियर ब्रेक कर देते हैं ना, तो पार्टिसिपेंट्स का जो ट्रू सेल्फ वो आपके सामने आ जाता है, एंड फिर क्या मजा आता है सारा, आई टेल यू। या So participate, connect, everyone feels comfortable, engaged, and are part of the conversation. Great. People who've just joined in, share your questions and let me know, because our team will flesh those questions and we'll have them just in a while. In the meantime, we're going to talk about generational diversity. Sadaf, Saqib, talking about generational diversity. So in every team, it's like we have a mini time machine. हमारे पास वो लोग भी मौजूद हैं जो कि ग्रो अप करे हैं रोटरी फोन्स के साथ घूमने, ये गोल गोल वाला, एंड देन those who can't live without their smartphones. So this mix of generations, जैसे baby boomers, Gen X, millennials, Gen Z, it's like having a family reunion at work every day. So in your sessions, how do you see this generational mix affecting the way the teams work and learn together? And how do you bridge these generational gaps? Is it like being a DJ at a party जहाँ पे जो है वो सबको different music पसंद है? How do you make them dance to the same beat? Sadaf. जी, जनरेशनल डाइवर्सिटी जो है उसके अंदर मुझे लगता है सबसे पहले अगेन हमारे अपने कुछ कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। हम कंफर्टेबल नहीं होते एक्सेप्ट करने में कि अब दौर बदल गया है और अब चीजें जो हैं वो डिफरेंट हो गई हैं, और कल के बच्चे वाला जो एक हमारे जहन में आता है, ये कल के बच्चे इनको क्या पता वाला एक जो माइंडसेट हो जाता है। आई थिंक हमें अपने अपने कैपेसिटी में उस पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। वी बीन हम्बल्ड, आई थिंक मैं अगर हमारे पेरेंट्स हो, आई थिंक उससे भी ज्यादा दे हैव बीन हम्बल्ड बिकॉज़ दे हैव सीन अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज होती गई है ओवर द इयर्स, इट्स बीन डिफिकल्ट टू कैच अप। So now 15-year-old may know better how to navigate the social platforms and the digital world than I would know. तो इस चीज को रिस्पेक्ट करना आई थिंक वो बहुत जरूरी है, इस और इसको समझना कि दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स। मुझे बहुत टाइम लगा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक रिस्पेक्ट अपने अंदर क्रिएट करने में। आई वुड ऑलवेज थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स यूजलेस, बट जब से अपना चैनल शुरू किया और रियलाइज किया कि दिस इज दी this is the thing of tomorrow and you cannot run away from it whether you like it or not, you have to embrace it। कि नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, हम इनको जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर ले, हम इनके बारे में जितना मर्जी बोल लें, इट्स हियर टू स्टे। तो एक तो ये चीज का मुझे लगता है कि अपनी अपनी कैपेसिटी में इस चीज को रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्किल सेट हमारे पास भी है और हमसे जो यंगर हैं उनके पास भी अपने स्किल सेट्स हैं, और एक जो बैरियर्स हम बना लेते हैं ना, वो उस पे से अगर हम लोग क्रॉस कर पाए और उन चीजों को अगर हम लोग देख सकें, और ये इट गोज बोथ वेज फॉर द यंगर लॉट टू आल्सो रियलाइज कि देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट द पीपल बिफोर देम हैव टू ऑफर। तो ये वाली चीजें जो हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी कहा कि ये तभी होती हैं जब आप कम्युनिकेशन के चैनल्स ऐसे बनाते हैं जिसके अंदर
और वैल्यूज, जैसे आई थिंक साकिब ने भी कहा, जब आप नॉर्म्स ये सेट करते हैं, इन माय ओन प्लेटफॉर्म, जैसे आपने मेंशन किया, फॉर अ कॉज, हमारी 3 कोर वैल्यूज हैं। वी कॉल इट अ सर्कल ऑफ टॉलरेंस, नॉन जजमेंट एंड रिस्पेक्ट। तो जब हमने ये अपना सेट किया हुआ है, तो हुएवर एंटर्स आवर सर्कल, दे नो कि दे विल नॉट बी जज्ड। तो उसकी वजह से दे फील दैट कंफर्ट लेवल दैट दे कैन confess or share or express whatever they feel like. रिस्पेक्ट का एलिमेंट जब आ जाता है, और ये नॉर्म्स, बिल्कुल सही बात है। अभी मैं आई एम वर्किंग विद कुवैत दीज डेज, और वहां पर मैं आई एम एंगेज विद स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान। तो उसके अंदर भी इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं कि आपने ये देखना है कि हर एक अपना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लेके आ रहा है। और मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को कहा, मैं आई हैव टोल्ड देम दैट you have to be the one who is the other person's support. You cannot change the world around you, but you can be the change yourself. तो ये जब इस तरह की जब आप कॉन्सेप्ट्स उनके दिमागों में डालते हैं, तो फिर जो चीजें हैं ना, और हमें वही वाली बात है कि एक नजर से हम दुनिया को देखते आ रहे हैं, वो नजर अगर हम बदलेंगे तो शायद हमें दुनिया एक मुख्तलिफ अंदाज से नजर आनी शुरू हो जाए। और जेनरेशनल भी अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना बदलने की जरूरत है। एंड there is a lot of I feel कि there is some bitterness and there is some friction, and also एक थोड़ा सा एक दूसरे के हवाले से not in a judging in a negative way वाला एलिमेंट चल रहा है। और उसका वही है कि जब हम क्रॉस ओवर करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ इंगेज होते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू भी हो सकता है, कन्वर्सेशंस के थ्रू भी हो सकता है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी हो सकता है। और ये चीजें दे शुड नॉट बी जस्ट सॉरी एक्सक्यूज मी, आई हैव टू So they should not be just, for that session alone, but they should be kind of आपकी कुछ, taking a pledge, or I promise, or that kind of thing, that they should be revisited. Such kind of value systems should be revisited, ताकि वो उस session के साथ they shouldn't end, but they should continue for a longer period of time in the long run. Okay, thank you, Sadaf. Saqib, this has to be really short so that I can cover my other question and then we move forward to rapid fire. सारा उनका जो बड़े है ना, उनका शिकवा ये है कि ये हमें सुनते नहीं है, और हमारा शिकवा ये होता है कि समझते नहीं है। आई थिंक बीच में ना कोई बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सॉरी, यू हिट द कॉर्ड, आपने बिल्कुल सही बात की है। वो जो है इसमें कोई बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। बैलेंस क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है एंगेज दोनों का होना लाजमी है। अब जब एंगेज होंगे तभी आई थिंक सदफ ने बिल्कुल अच्छी बात की। मुझे जो लगता है ना, ये ऐसे बड़ा इफेक्टिव है कि स्टोरी टेलिंग, उनको मजा आता है स्टोरी सुनाने में, और हमें मजा आता है सुनने में, अगर स्टोरी मजेदार सुनाई जाए अंदाज में। सो आई थिंक अगर इनको पहले एंगेज किया जाए कहीं पे, कैसे लाइक एक्टिविटीज के थ्रू इन्वॉल्व किया जाए, वेयर इन बड़ा एक अगेन सेफ स्पेस हो जिसमें जजमेंट ना हो, तो ये जो एक्सपीरियंस, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, बिकॉज उससे विजडम आता है। और हमारे पास क्या है, या जो अभी जनरेशन है उनके पास क्या है, उनके पास टेक्नोलॉजी की वो थिंकिंग है कि कैसे नए ट्रेंड्स क्या हैं। सो अगर ये इनको मिला के हम कोई प्रोडक्ट तैयार करें ना, तो बड़ी मजेदार प्रोडक्ट, धमाकेदार प्रोडक्ट बन सकती है। सो आई थिंक लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम वो बायसेस और जो असम्पशंस हैं वो थ्रू एंगेजमेंट खत्म हो सकते हैं। ओनली देन कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम, लाइक मेरा तो बड़े अरसे से वो है कि ये जो रिटायर्ड बंदे होते हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है, कोई ऐसा मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया जिनके साथ में यंगस्टर्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे और मे बी इन कहीं पे भी एंगेज किया जाए, ताकि ये एक इकोसिस्टम बन सके। सो या नाइस, ये प्लान करें हम हैं आपके साथ। ओप्स ओके, विद रिस्पेक्ट टू DEI एंड ऑफ कोर्स इंक्लूसिव लीडरशिप, जो आज का हमारा टॉपिक है, हर लीडर को डर है कि वो कहीं रॉन्ग मूव ना कर ले, किसी रॉन्ग लाइट में ना दिख जाए। अगर कोई CXO या कोई लीडर लर्न करना चाहता है हाउ टू बिकम बेटर लीडर्स with respect to DEI again, are there any points that you can throw at them maybe so that they could challenge their own beliefs, share their perspective, shift their perspectives and become a better version of themselves? Just 2 lines, Sadaf. The 2 lines has kind of, lip locked me, because 2 lines के अंदर बताना बड़ा वो मुश्किल है. I think we are coming across the same thing over and over again. It's about opening your mind. I would say कि please have an open mind. Don't fall to judgments. I would say practice the pause, जैसे मैं अपनी बहुत सारी trainings में कहती हूँ कि please stand back, reflect और देखें जरा चीजों को, एक take a deep breath जिसको हम कहते हैं, वो literally भी लें और वो metaphorically भी, कि हर चीज को it doesn't need a reaction, और वो जो है ना stimulus और
उसके बीच में रिस्पॉन्स के बीच में यू हैव सम टाइम, तो उस टाइम को जरा वाइजली अगर आप यूज करें, एज आई मेंशन बिफोर, this kind of leadership will need more reflection, it will need more communication, it will need more engagement. Saqib, thank you so much, Sadaf. I think मुझे लगता है कि लीडर को ना ये सोचना होगा कि इदारा अजीज है या अना अजीज है. So जब ये सवाल में तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करे, और जब सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू समझे कि यार मैं वाकई आई नीड टू अनलर्न, आई नीड टू डू थिंग्स डिफरेंटली, उसके बाद उसको फीडबैक लेना चाहिए फ्रॉम peers, फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड मेंबर्स एंड जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो अगर आप मैनेजर तो आपके अंदर जो काम कर रहे हैं उनसे, एंड फिर उसके बाद एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करे, अगेन हम बार बार उसी की बात करें कि सेफ एनवायरनमेंट जिसमें ना सिर्फ उसके बिलीफ सिस्टम क्वेश्चन हो, but at the same time वो भी innovate करे, वो भी invite करे ideas, and that's where actually like जब आपकी ये ब्रेक होती है चीज, तो क्यूरियोसिटी जन्म लेती है. एंड क्यूरियोसिटी, गूगल देखे ना, गूगल में क्या कल्चर है? गूगल में कल्चर ये है कि आप बैठते हैं, यू शेयर आइडियाज, एंड देन व्हाट हैपेंस, आपके एक से एक आपको प्रोडक्ट मिलती है. व्हाई? बिकॉज वो कहते हैं कि आइडिया ले आओ और सोचो कि अगर तुम इसको 10 टाइम x बड़ा कर दो तो कैसा होगा, 20 टाइम x इसको इफेक्टिव बना दो तो कैसा होगा. सो इस तरह का माइंडसेट अगर लीडर दे ना, तो बहुत एक तो सेल्फ एट द सेम टाइम, बट इदारे का और एम्प्लॉय का जो काम कर रहा है, या किसी भी सोसाइटी में, आई थिंक हम बहुत सारे मसले हैं सॉल्व हो सकते हैं, मगर कमी जो है ना वो बस इस बंदिश की है कि डर है अंदर, जो बेसिकली जो इन्वायरमेंट सेफ नहीं है, जिसकी वजह से वो एक sort of बंदा रुका हुआ है, वो जो पोटेंशियल है असल वो निकल नहीं पाता. सो लिसनिंग, फीडबैक ले, अना से अजीज समझे अपने उसको, जो गोल है उसका, जो लर्न करना है उसने, जो अनलर्न करना है वो, एंड फिर आई थिंक आसान हो सकती है बहुत सारी चीज़ें इदारे के लिए भी, सोसाइटी के लिए. Behtareen. Okay, Zabardast. Can we have questions from the audience? I saw a few flashing. Just one, maybe, if we could take. Definitely. So Yasir, hi, Assalamu alaikum Yasir. Thank you for joining in. Your question is, how do you deal with stereotypes in organizations? It's nice to discuss diversity, but stereotypes are really difficult to resolve. How do you address those? Who would like to take this question? आई थिंक ये कंपनी के कुछ नॉर्म्स जैसे हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो दे शुड बी लाइक नॉन टॉलरेबल काइंड ऑफ सेगमेंट के अंदर आनी चाहिए. और स्टीरियोटाइपिंग बहुत सारे हवालों से की जाती है, वो रेस के हवाले से भी, जेंडर के हवाले से भी, बहुत सारे और बहुत सबलिमिनल वेज में भी की जाती है. अगर तो, और मुझे जो अभी साकिब भी बात की थी, उस पर भी मुझे ख्याल आता है, वी शुड हैव सेफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो. ऑफन वी आर नॉट vocal about our concerns because we are afraid of being traced back and then that becoming an even bigger issue than it was meant to be. मतलब आपकी कोई शायद कोई छोटी सी बात हो, आपको एक चीज फील हुई हो, लेकिन you are afraid to voice it out because you don't want to go through the entire process of वो जो बात के बतंगड़ बनने वाली हम जो बात करते हैं कि वो तनिक blown out of proportion और क्या क्या उससे assumptions लग जाए. और I have noticed कि मेरा तो जो जितना एक्सपीरियंस है कि बहुत रेयरली सेफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं कि एम्प्लॉइज फील दैट दे कैन वॉइस के इफ दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, तो उसको वो वॉइस कर सकें. तो ये बातें जो स्टीरियोटाइपिंग की आप कर रहे हो, ये बातें तो घर से भी शुरू होती हैं, ये बहुत सारी बेसिक लेवल से शुरू होती हैं. और हम लोग इसको आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी पॉइंट देम आउट. अब वो जमाना नहीं है कि आप ऐसा ही होता है और ऐसा ही रहेगा वाला. मुझे लगता है दैट्स वेरी रॉन्ग अप्रोच. वी हैव टू काइंड ऑफ पुट आवर फुट डाउन और कुछ ऐसी एग्जांपल सेट करनी चाहिए ताकि किसी भी किस्म की स्टीरियोटाइपिंग, और इसको आप आई थिंक हरासमेंट के भी लेवल में लेके जा सकते हो, तो उसको कंडेम भी किया जाए. और अगर इफ यू सी इट हैपनिंग, इफ यू नॉट द विक्टिम बट इफ यू सी इट हैपनिंग, यू शुड हैव दैट, and the company should ensure that the space is safe enough for someone to call out if they see something like that going on. Right. Thank you so much, Sadaf. Saqib, I'm not going to take your answer on this. I hope it's okay. And now let's switch gears for a bit of fun and insight. We're starting the lightning round where the questions are quick, but the answers are full of wisdom. Saqib and Sadaf, are you ready? Let's fire away.
ask question, and then Saquib, you can answer, and then Sadaf, and then for the next question, Sadaf can do first, and so on and so forth. What's one piece of advice that you'd give to your younger self, Saquib? Younger self. Yeah. Aapka jawan, aapka Right, bacha version. I think maybe if I could change it, yeah, I travel back करूँ, I'll change my mentors. Okay, that's very deep. Yeah. Sadaf. Oh man, this is tough. To my younger self, I would say that keep um, keep your journey going. Don't give it a break. I think that's where I went wrong. Okay, wow. Share your favorite book, Sadaf. Can't name one. There are too many. अभी मैं 7 Habits पढ़ रही हूँ और साथ में वासिफ अली वासिफ को पढ़ रही हूँ. So मेरा बड़ा diverse spectrum है of books का. It's too hard to name just one. Hello. I think we just got a little net issue. Sarah is a little. Oh yeah. I think she Yeah. is. Okay, Saket, you tell us which is your favorite My book. favorite book, it's all-time favorite. I had started reading it. I reread it. It's Think Again by Adam Grant. It has really like changed my the way I Okay, think. I'll put Yeah. it in my list. Me. We can do this rapid fire ourselves. I think it's without Sarah, it's a bit. I hope is she back now? Okay, we can continue with the session, I suppose, if we are Yeah, still yeah, online. sure, yes. Okay, so what's the What's your best thing favorite? you like about this book? ट्रेनिंग की मेमोरीज बताएं जरा आपकी क्या फेवरेट रही है कोई रिसेंट कोई Oh. पास्ट में There's this student in my session these days who had a lot of problem with stammering, and it was so bad that it actually brought tears to my eyes, and it was so painful to see him struggle. And I think I feel this was a very like powerful moment for me because I just mentored him. I gave him some kind of counseling. उसके साथ मैंने one-on-one थोड़ी सी session भी किया. Or the next time, and I told him to watch a couple of things. Sarah, we just carried on without you. We thought we'd Thank you so cover much, the guys. gap. You're amazing. Thank you so much. Can I Okay, go on with the good to next have you question? back. Yeah, Okay. sure. Sure. So Saki was telling me his favorite book, and then I don't know what his book did to my. Sarah, can you hear me? Gone again. Sarah is gone again. I think we can have a movie by the name of Gone Again. Okay. So that student Yeah. in the next session, he actually came and gave a speech, and he said it was the first speech of my life. So that was he was still stammering. It's not like कोई miracle या magic हुआ था, but just to see him, come up and speak, that meant a lot. जी, Saqib. Am I Amazing. here? You are here, absolutely, Sarah. Somebody took me backstage. I don't know why. I was asking about Saqib's favorite book. देखिए लीडर हो ना हो काम चलता रहना चाहिए दिस इज व्हाट वी नीड टू like be telling people Exactly. And improvise. right absolutely so Sarah अब फिर से I think you're gone again but I'm फिर से I don't know कब तक ये चलता रहेगा पूरी Saqib, I बात think it's the book. I think it's the book. Change the name of the book that you like. It's jinxing it all. maybe yeah maybe yes so Am I my there? book is Yeah. Sadaf Usman book it's Think Again by Adam Grant. Wow, I love Adam Grant. Tell Yeah. me, Sadaf, your go-to self-care routine when you need a break. Am I gone again? There's this really lovely place by the name of Rangi Rang Cafe. If you really want a literal kind of answer, so it's a very nice kind of hideout, very cozy, and I love to go there. They have this nice piano playing at the background, and it's all green and quiet. It's like a little library. So when I need to kind of untangle the web inside, or I just need to recollect myself, I love to go there and just with a book and a cup of coffee, and it helps me kind of untangle the mysteries of the mind. Nice. Is it in Lahore? Yep, Of it's in course. Kazafi. I'd love to take you when you visit. Inshallah. Saqib, self-care Whenever ritual. I'm in my hometown जब मैं hometown में होता हूँ तो I go to there's this desert हमारे बिल्कुल hometown के बिल्कुल 20 no not 20 एक घंटा 1.5 घंटा दूर so उस desert के बीच में there's a lake beach में so I go there spend time connect with the nature and self reflect
अमेजिंग फीलिंग. अभी मैं होकर आया वैसे एक दिन पहले. मुझे पता है. Oh, yeah. Tell us So, And I about think, us. Yeah. no, no, you go ahead. We're running out of time, so I'm just gonna skip a few questions. Okay, so if you could have dinner with any historical figure, who would it be and why? Saqib. ये सदफ से That was पहले a पूछे, मैं सोच रहा नहीं, हूँ. ये गूगली था. ये I गूगली was, था. ये आपकी है. Okay, okay. Again, come again with my favorite, like If you historic could have history. dinner with any historical figure, who would it be and why? भी बता दे. I think it would be my great grandfather. Okay. And why? Because शायद वो आज के उनको मैं बता सकता कि आगे कैसे गुजारें ताकि आगे वाली जनरेशन्स ठीक हों. Oh. Whoa. Sadaf. I think just a moment we have something. Okay. So, well, ideally it would be, I would, कहना भी मुझे वो लग रहा है कि I would want to meet the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or obviously the reason would also be very obvious that, to kind of, अब वो भी बात है कि बस just to be in his presence, obviously, just to kind of get all the barakat and the, रहमतें जो उनकी presence से मिलती हैं, wash them off myself. Beautiful. What's your proudest accomplishment so far, Sadaf? Um, I think every time I've been able to help someone feel good, I've been able to lift someone up. I think those have been actually the proudest moment for me. So I work with TCF, I work with these initiatives of public good, and every time I've had someone tell me that it has helped them, या किसी ना किसी तरह से किसी को कोई सुकून जिंदगी में कोई ज़हनी सुकून भी मिला या spiritual benefit मिला है through my poetry or my work, that has been I would not even say proud. It's been a blessed moment, alhamdulillah, for those. Saqib, proudest accomplishment so So far. so I mentor these guys from the villages. Two of them, बिल्कुल ही remote area से हैं. मैं जब during my sessions with them, so मैं जो आंखों में उनकी चमक देखता हूँ ना, it's been 2 years, more than 2 years now, but अब वो आके so hometown में रहे and then spend time with यहाँ के लोग. Again वो it has changed them as a person. उनका perspective change हुआ life में. And one is now turning into a lawyer. I mean, Mashallah. he has, and the other one has started his own academy. Amazing. Yeah. So what's your feeling and a connectivity wali, and actually people you could see them achieve, and or maybe they're going towards their the goal. It's such a great feeling. And what's a favorite childhood memory that still makes you smile, Saqib? Oh, my days when I used to play cricket for my school. Amazing memory. I think I remember that at school में वो जो you have this school में आपको वो होती है ना your attraction. So the girls cheering on your sixes and fours and centuries. This is what. So this is, I'll be honest with you. Yes. So this. So yeah. So it's I was basically a good cricketer during my days. So I was a very good cricketer also. Still am, by the way. I remember that कि वो मुझे भूलता नहीं है अभी तक. वो the smile and Sadaf, what do you have to say about your favorite I would childhood? say all the vacations that I went to with my family. I think we should invest in experiences. ये जो हम लोग consumerism के उसमें हैं, I think we shouldn't even bother about it. As much as of an experience we can give to our children, वही बातें याद रहती हैं जो time आपने अच्छे वक्त एक दूसरे के साथ गुजारे होते हैं ना, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है जो आप अपने बच्चों को दे सकें. So I thank my parents for the wonderful vacations they took us on during our childhood. Mera last question hai, but I don't know if Saqib would want to answer this. Name your two most favorite mentors. Why? Saqib, आपको पास कर दें हम? आप पास करेंगे question? No, I would like to answer, but Sadaf पहले answer देते फिर I'll respond. Sadaf, आप बता दें. Two mentors. I've had Ehsan Sahab from the Citizens Foundation. He's been a great mentor. He still helps me out in a lot of things. And then my father has been a great mentor to me, and he's also guided me a lot.
Sakib. To my first is Umair Jalewala. Reason being, like अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, it's basically maybe, so वो जो जोहारी विंडो का unknown quadrant होता है ना, so आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर वो क्या है, but unless you explore, unless like experience things and you keep doing it, so शायद मैं उस वक्त वो इतना वो नहीं था, but as the time went by, मैंने अपने आप को explore किया है, and I think this is what I'm doing right now. Maybe credit goes to Umair, number one. He believed in me in initial days when Torque was, like कुछ भी नहीं था, वो screw डाल के वो brochures भेजा करते थे. I think there on Umair throughout guidance, mentorship, and then Shri led by example. Seriously, मतलब करके दिखाया कि leader कैसे होता है, कैसे उसको inclusive होना चाहिए, कैसे उसको guide करना चाहिए. So two of my favorite mentors always remain my mentors. So, thanks to them. Yeah. Thank you so much, Sakib and Sadaf. As we wrap up today's incredible session, I want to extend a heartfelt thanks to both of you for sharing your invaluable insights. To our viewers, I'm just so happy that you were nothing short of amazing with your engagement and curiosity. Thank you, Ali, Yasir, Hina, Sanduzai. You may please reach out to us to engage our tribe experts for learning interventions. You will see our contact details down there. Thank you once again. Thank you to our team, Ali, Ayaz, and Umair. Thank you, my pretty cool audience. Please keep chasing those thoughts, and remember, the journey is as significant as the destination. So hold that thought until next time. Keep thinking, keep questioning, and never stop exploring the who that leads to the what. Goodbye and Allah Hafiz. तन्हा ऐसे क्यों बेचैन फिरे जागेंगे जरूर ये भाग तेरे कोई ये जोश तेरा कोई